Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustasan, your teacher for CSC322 Operating System Concepts. This is my third lecture. We have already started the introduction part, and in the last lecture we were talking about the hardware reviews. So I will continue from the point at which we stopped in the last lecture, and the next topic of the hardware review is the I/O devices. Operating system is required to interact with the I/O devices. The I/O devices generally consist of two major parts. Part number one, the device itself, and part number two, the controller. The controller of the device is also known as the interface of the device. It is usually an intelligent interface. Why we call it as intelligent interface? Because it contains the control chip. What is a control chip? Control chip, you can assume that it is also a processor. So by itself, the controller of a particular device, maybe a bit complicated device, is by itself is a independent processor. But we don't call it as usually processor, we call it as a control chip or controller. The physical control of the device is with the controller. Basically, the purpose of this controller is to interact directly with the device. So the controller is better knowledgeable and understand the function and the functionality of that particular device. So it accepts the commands from the operating system and execute that. So basically, it's not the end user, it is the operating system. And then it is a special part of the operating system, we will explain it later on, that communicate with the controller and that provides the instruction to the controller, and subsequently that controller interact with the device. So the controller has its own registers like the CPU registers, which are used to communicate with the driver. What is driver? I will explain you later on, but at this stage you assume that driver is the software part of the operating system that instruct the controller or that provide the instruction to the controller. So the commands are usually very complex, and I have already given you the example of the floppy disk that it's not very simple to deal with the I/O devices, and you need to provide lots of details to the I/O devices. So basically the functionality of a controller and the device driver, that is the part of the operating system, is a bit complex. So device driver. I have already talked about the device driver. Device driver is a software. It's a special software, a specialized software that has all the detail to communicate with a particular device. So it understands the total functionality of the device, it understands the minute detail of the device. So what are the detailed commands that are to be given to the device, what should be the sequence, and what should be the parameter that a device requires in order to execute the instructions or in order to complete the task it is assigned to. The controller manufacturer supplies the device driver for each operating system. जो कंपनियां कंट्रोलर प्रोवाइड करती हैं, उन्हीं कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि they do provide the instructions in the form of software. So device driver is the responsibility of the company that has developed the controller, ताकि दोनों की compatibility रहे, दोनों की understanding रहे, दोनों की functionality रहे. So this device driver becomes the part of the operating system in three different ways. Number one, by relink. Relink means that you have got the module, you have got the executable, you have to link it with the operating system. The second way is to make an entry. Operating system maintains a table, maintains the table of all the
procedures, all the routines that are expert of dealing with a particular device, or that are expert of dealing with a particular task that has to be carried out into the kernel mode, or that has to be carried out by the operating system. So the depends upon the type of the device driver, that whether it should make the CPU to relink itself, or it makes the CPU to just simple make an entry into its table. I'll explain it in subsequent slides, that what are those tables and how the operating system makes certain entries and how they work. The third one is on the fly. On the fly, for example, you just insert a USB, and the system, if doesn't have the USB, it's simply without rebooting the system, it picks up the driver. It picks up the device driver. So in the first two parts, the relinking of operating system and making an operating system, you are required to reboot the operating system. Whereas in the third case, which is the on the fly, you are not required to reboot the system. And I have already said that these device drivers work or carry out the instructions in the kernel mode, which is a privileged mode, which is a mode which is protected from the rest of the users. Then there is another concept which is called I/O addresses, I/O address space. We have the memory address space, we have the I/O address space. This is a very important concept, so please just concentrate on that. If we have the I/O address space, that is the part of the memory address space. ठीक, memory की एक address space है. अगर I/O address space उसका subset है, उसका part है, then basically you are not required to provide additional instructions to handle that particular device. यानी कि reading from the device and writing into the device is just like reading the data from the memory or writing the data into the memory. बात समझ में आई कि अगर ये एड्रेस स्पेस है, I/O एड्रेस स्पेस मेमोरी एड्रेस स्पेस का सबसेट, तो जिस तरह मेमोरी को आप इंस्ट्रक्ट करते हैं टू रीड अ ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम द डिवाइस और राइट अ ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम द डिवाइस और रीड अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द मेमोरी और राइट अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर इनटू द मेमोरी, बिल्कुल ऐसे ही आप डिवाइस को और यूज कर सकते हैं. बट इफ दिस I/O एड्रेस स्पेस इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेमोरी, तो फिर you are supposed to have the separate I/O instructions for that particular device. Okay, I'll explain the concept in detail later in the slides. So there are three modes in which our device driver work or device driver communicate with the controller or provide the service into the controller. मैंने आपको बताया ना, डिवाइस ड्राइवर जो है that is the part of the operating system. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है और इट इज सपोज टू कैरी आउट सर्टन आईओस, सर्टन इनपुट आउटपुट इसने परफॉर्म करनी है. सो उस इनपुट आउटपुट को परफॉर्म करने के लिए देयर आर थ्री डिफरेंट मोड्स which are available and which are coded within the device drivers. One is called polling, number two is interrupts. So you can just perform the I/O through polling, you can perform the I/O through interrupts, or you can perform the I/O through DMA. DMA stands for direct memory access. So these are basically the three modes through which you instruct the I/O devices to perform their task. So what are these? Let us discuss it one by one. And first of all, I/O by polling devices. A user device, a user program basically submit a request to read from a device or write into the device. And how does the user program do that? Basically, user program request any service from the operating system through a system call. It requests the operating system with the help of a system call which has categorically
provided to carry out such task. इसकी भी डिटेल हम थोड़ी देर में फर्दर देखेंगे. Then once the system call is executed, it transfers the control from the user space to kernel space. आपका जो एक यूजर मोड होता है, एक कर्नल मोड होता है. यूजर मोड के लिए your program is in the user space. When you are in the kernel mode, all the instructions which are in the kernel mode are in the kernel space. ये भी एक डायग्राम में अभी मैं आपको दिखाऊंगा. So the driver then starts the IO and sits in a tight loop, continuously polling the device to see whether the task has been completed or not. Usually एक bit assigned होती है और that bit could either be in PSW, प्रोसेस स्टेटस वर्ड, एक रजिस्टर है जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर सपोज एक बिट है या वो एक स्पेशलाइज्ड बिट है समवेयर. यू द डिवाइस ड्राइवर नोज इट वेरी वेल कि ये कौन सी बिट है, वेदर इट्स अ बिट ऑफ ए कंट्रोलर, वेदर इट्स अ बिट ऑफ द स्टेटस रजिस्टर. सो द ड्राइवर आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग the device to carry out the task keep on checking and monitoring the status of the device by monitoring the particular bit. उस bit को read करता रहता है loop में बार बार. एक control tight loop है जिसमें उसका वो status check कर रहा है. Why? Because as soon as the task is completed, the controller sets that particular bit. जब वो bit set हो जाती है तो पता चल जाता है कि the task has been completed. So the CPU is in busy waiting और इसको कहते हैं CPU busy waiting. CPU is busy in waiting that the task should be completed. Obviously, it's a big waste of CPU resource. CPU is not doing anything except just checking the status. ठीक है, आप किसी के इंतजार में बैठे हैं कि वो कब आएगा. Constantly आप looking at the door or waiting for someone to come in and you are not doing anything. दूसरी सूरत अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है, through interrupt. Let me complete this. When the IO has been completed, the driver puts the data where they are needed from where it has read and sets the required bit indicating that the task has been completed. It is called programmed IO. बट मैंने आपको बताया था सिंस ये CPU का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम जो है और बड़ा प्रेस्टिशियस टाइम जो है, बड़ा प्रेशियस टाइम जो CPU का है उसको वेस्ट करती है, लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होता जा रहा है कॉन्सेप्ट. सो IO बाय पोलिंग कॉन्सेप्ट जिसमें कि CPU का टाइम वेस्ट होता था, स्लाइटली इसको खत्म होता जा रहा है इन दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी. सेकेंड इज IO बाय इंटरप्ट. IO by interrupt means के आप interrupt करते हैं CPU को कि that the task has been completed. What is an interrupt? Interrupt is like the call bell of your home. अभी मैंने आपसे कहा था कि एक तरीका है कि आप एक कुर्सी लेके गेट पे बैठ जाएं और आने वाले का इंतजार करें और कोई काम ना करें. दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप अपना काम करते रहें घर में और जब आने वाला आएगा वो आकर आपकी बेल बजाएगा. यू विल बी इंटरप्टेड बाय दैट बेल एंड देन यू विल लीव वट एवर यू आर डूइंग. जो काम भी आप कर रहे होंगे उस काम को आप छोड़ देंगे और उस इंटरप्ट को अटेंड करेंगे और आप देखेंगे कि गेट पर कौन आया है और क्या चाहता है आपसे. ओके, सो ये तो है कॉन्सेप्ट इंटरप्ट का. अब इन ऑर्डर टू कैरी आउट द IO you can do it with the help of interrupt. It has got two aspects. फर्स्ट एस्पेक्ट इज द हार्डवेयर एस्पेक्ट कि हार्डवेयर में ये कैसे होता है. मैंने आपको बताया ना कि कंट्रोलर है जिसने डिवाइस से डेटा को रीड करना है और यूजर प्रोग्राम को प्रोवाइड करना है, तो इसके अंदर कुछ हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है. तो लेट अस टॉक अबाउट बोथ द एस्पेक्ट्स कि हार्डवेयर एस्पेक्ट के अंदर what are the sequence of activities needs to be performed and then we talk about the sequence of activities जो कि यूजर को नजर आ रही है through the software or within the software. Okay. So the device driver basically requests the controller for any IO writing into the device register. वो जो instruction है वो कंट्रोलर को देता है डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर क्या है मैंने आपको बताया, इट्स अ सॉफ्टवेयर.
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिवाइस ड्राइवर को बताती हैं कि रीड आउट सर्टेन डेटा, प्रोवाइड ऑल द पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स उसके कंट्रोलर के रजिस्टर में लोड करते हैं और उसको इंस्ट्रक्ट देता है डिवाइस ड्राइवर टू कैरी आउट सर्टेन टास्क। द कंट्रोलर देन स्टार्ट्स द डिवाइस। ओके, ये आपका जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है डिस्क कंट्रोलर। ये डिस्क कंट्रोलर को सीपीयू बताता है स्टेप नंबर 1 के अंदर टू कैरी आउट द टास्क, यानी कि आपने डिवाइस से रीड आउट करना है, प्रोवाइड ऑल द पैरामीटर्स एंड डिटेल, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कंट्रोलर टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर डिवाइस टू परफॉर्म द टास्क। Then the controller then starts the device, and also after controller finishing reading or writing signals the interrupt controller chip using certain bus lines। अब अगर आप इसके अंदर देखें इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के अंदर, तो ये सीपीयू जो है इंटरप्ट कंट्रोलर भी है इसमें और एक डिस्क कंट्रोलर भी है। इंस्टेड ऑफ वन कंट्रोलर इट हैज गॉट बेसिकली द दिस इज द बस, which is the bus communicating the controller, and you have got two controllers, एक interrupt controller है और एक disk controller है। Disk controller is a specialist of dealing with the disk, जबकि interrupt controller is a specialist of interrupting the CPU। So once this task is completed, the disk controller tells the interrupt controller that the task has been completed, और ये इसकी बिट को सेट करता है, ये इसको बता देता है कि task has been completed, now you have to tell the CPU। तो ये CPU को interrupt भेजता है through this way, number 3। Okay, controller after finish reading or writing signals the interrupt control chip using certain bus lines। Okay, अब if the controller accepts the interrupts, then it puts the device on the bus। अगर ये accept कर लेता है कि हाँ ठीक है, डिस्क की जो रिक्वेस्ट आई थी नंबर 2, अगर ये इंटरप्ट कंट्रोलर जो है, अगर ये इंटरप्ट कंट्रोलर एक्सेप्ट कर लेता है इंटरप्ट, तो फिर ये क्या करता है कि ये इसको कहता है कि यस ओके पुट द डेटा हेयर, और सीपीयू को कहता है कि द डेटा इज अवेलेबल, यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द बस, and it put the device online। अब मैंने एक लफ्ज यूज किया कि अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, what does it mean? It's mean that there is a chance that the interrupt controller may not accept the interrupt from the disk controller। Why? It should accept that। The reason is that if the CPU is doing something very special, कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी का टास्क कर रहा है, then the CPU disable the interrupt of this interrupt controller by using DI instruction कि disable interrupt। For the time being ये interrupt को disable कर देता है so that the CPU may not be interrupted while it's carrying out some task of the highest priority। Okay, and after completing the task of the higher priority, CPU enable the interrupt। अब दोबारा इसका interrupt enable कर देता है कि अब now you can accept the interrupt from any device। So depending upon the status of the interrupt controller, it may accept or may not accept the interrupt। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि suppose you want to do something very special, or suppose you want to take rest at home, that is a very priority job। You have been working so long and very hard tasks you have completed, and you need a rest, and you don't want that any interrupt should be received by you। So what you do? अब आपका जो interrupt controller है वो आपकी call bell है, जो आपको interrupt करती है, force करती है कि आप जाके गेट पे चेक करें कौन आया और उसको अटेंड करें। But if suppose you want to go to sleep and you don't want that anyone should be interrupting you, what you do? You disable the interrupt। कैसे? आप अपनी कॉल बेल का बटन स्विच ऑफ कर देते और फिर no one could call you, या आप अपने टेलीफोन को ऑफ कर देते हैं, मोबाइल फोन को ऑफ कर देते हैं। ओके, सो बेसिकली ये वही है कि यू हैव डिसेबल्ड द इंटरप्ट। और अगर आप सपोज यू आर इन ए मीटिंग, यू आर डीलिंग talking to your boss, or you are delivering certain presentation and you don't want that any telephone call should interrupt you, so you switch off the
योर मोबाइल फोन, जैसा कि मैंने अभी किया है लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले. आई हैव switched off my mobile phone so that nobody should disturb me while I am delivering this particular lecture. Okay? So, ये तो था hardware aspect of the interrupt. Let's see the software aspect of the interrupt. Software में क्या है कि your program basically ask in your program you code that you need to read the data from the disk. So basically the CPU which is executing the instructions given in your program. So once the CPU finds out the instruction given in your program to read the data from the disk, तो basically आपने CPU को instruction दे दी है कि आप एक interrupt generate करें. Interrupt कैसे generate करें कि आप user mode से shift करें kernel mode के अंदर. And before doing that, it is the responsibility of the operating system to save total environment. आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, उसको उसने सेव करना है, उसने प्रोग्राम काउंटर को सेव करना है, उसने आपकी तमाम जो ओपन फाइल्स हैं उनको सेव करना है. आई विल कम बैक टू दिस ऑल इन डिटेल. सो इट बेसिकली सेव ऑल द इन्वायरमेंट ऑन टू द स्टैक और समवेयर एल्स, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. एंड देन इट switches the mode. अब आपका यूजर प्रोग्राम जो है उसको छोड़ देता है CPU और वो शिफ्ट कर जाता है कर्नल मोड के अंदर, और कर्नल मोड के अंदर इट स्टार्ट्स द हैंडलर. सो बेसिकली आपके ये जो प्रोग्राम है इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो सेव कर देता है और देन फ्रॉम करंट लोकेशन it interrupt takes the control to the kernel mode. ये जो ग्रे शेड है, this is the kernel mode. Here the task has been carried out, and after completing the task, when the IO task has been completed, then the handler after completing the IO task, CPU returns back to the previous program. तो आपके भी तो बड़ा ये सिंपल सा काम है कि आपने इंस्ट्रक्शन दी, CPU ने कर्नल मोड में ले गया, कर्नल मोड से जाके CPU ने आपको IO परफॉर्म किया और उसके बाद वापस रिटर्न किया. जब रिटर्न किया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी प्रोग्राम की वहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया. सो आपने देखा दिस इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन. सॉफ्टवेयर के अंदर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड की गई है. ऑल द डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज हैव बीन हिडन फ्रॉम द यूजर. तो यूजर का जो प्रोग्राम है उसको नहीं पता कि ये IO को हैंडल करना कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है. So this is another way through which you can read write data, and that second option is reading and writing using the interrupts. Next, third mode of operation is IO by DMA. मैंने आपको बताया DMA stands for direct memory access. Direct memory access. So it is a special controller that is called direct memory access. ये एक बजाते खुद एक इंटेलिजेंट कंट्रोलर है, और मैंने आपको बताया कंट्रोलर को आप अज्यूम करें कि बजाते खुद एक कंप्यूटर है, बजाते खुद एक CPU इसके अंदर मौजूद है, and it has got all the facilities to carry out certain tasks. So it can carry out the task by avoiding using the CPU as a part to transfer the data from the memory to the device or from the device to the memory. Basically, it is the responsibility of the CPU to set up the stage. Stage क्या set करनी है? Telling how many bytes to transfer, the device and the memory addresses, कि मेमोरी से अगर डिवाइस पे लिखना है तो कितनी बाइट्स लिखनी है और कौन सी डिवाइस पे आपने राइट डाउन करना है. सो इट नीड्स टू प्रोवाइड द एड्रेस, द नंबर ऑफ बाइट्स, ऑल द डिटेल्स एंड द डिटेल्स ऑफ द डिवाइस ऑल्सो. और अगर डिवाइस से रीड करना है देन इट नीड्स टू प्रोवाइड कि किस डिवाइस से रीड करना है और मेमोरी में कहाँ रखना है. आफ्टर सेटिंग अप दिस टास्क, CPU leaves the job to this DMA chip, to the DMA controller. So DMA controller, without using the CPU, without interrupting the CPU, does the job, and after completing the job, the CPU को interrupt करता है once again, and that के job has been finished. इससे जो पहले वाला इंटरप्ट वाला फिनोमिना था उसमें और इसमें फर्क समझ में आया. उसमें क्या था कि CPU आप यूजर के प्रोग्राम को स्टॉप करके यूजर के प्रोग्राम को
स्टैक के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर यूजर के एनवायरनमेंट को सेव करता है और यूजर मोड से ट्रैप करके कर्नल मोड में जाता है। अब कर्नल मोड में भी किसी प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है, कर्नल मोड में भी डिवाइस ड्राइवर ने एग्जीक्यूट होना है। उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और तमाम डिटेल प्रोवाइड करता है, और फिर वो उसके बाद जब वो डेटा आ जाता है तो फिर वो सीपीयू को इंटरप्ट करता है। लिहाजा सीपीयू को यहां पर कंट्रीब्यूट करना होता है, जबकि डीएमए की केस में ऐसा नहीं है। डीएमए की केस में सीपीयू जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड देन ऑल दी डिटेल्स are coded into the device driver of the DMA controller, and this DMA controller completes the task। और सारा काम कंप्लीट करके सीपीयू को ये नहीं कहता कि डिवाइस से डेटा रीड करे, डेटा भी उठाकर मेमोरी में पहुंचा देता है। So once the data is available into the memory, and then it interrupts the CPU कि मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, the job has been finished, then सीपीयू वहां से डेटा को यूजर प्रोग्राम को प्रोवाइड कर देता है। सो बेसिकली इट स्पेयर्स द सीपीयू टू डू सम अदर टास्क, तो सीपीयू फुल टाइम एंगेज नहीं रहता। सो वी हैव सीन द थ्री मोड ऑफ ऑपरेशन, एक बिजी वेटिंग, सीपीयू बिजी वेटिंग जिसको हम पोलिंग कहते हैं, दूसरा थ्रू इंटरप्ट, और तीसरा थ्रू डीएमए। आई होप कि आपको समझ में आ गए तीनों मोड थ्रू विच यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डिवाइस। Okay, next is the bus hierarchy. We are reviewing different I/O devices, different hardwares, and their working. And the next device that we would like to discuss, or the next hardware we would like to discuss, is the bus. What is a bus? Bus is nothing but simply a channel, a path through which the data and the instructions travel from one point to another point. Okay, so bus जो है basically transfers the information. It could be two type of information. It could be the data, or it could be the control instructions, or it could be the status bit. So basically information को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए you require a path, and this path is basically an intelligent path, और इस path को हम कहते हैं bus. Usually आप देखेंगे एक ribbon cable होती है, वो ribbon cable जो है basically is also called as a bus. वो एक bus का काम करती है to transfer the data, for example, from the hard disk to the memory, or from the memory to the hard disk. In the beginning, there was just only one bus, which is called ISA, Industrial Standard Architecture. Again, it was invented in the beginning, so that's why it was not capable of handling the traffic of the modern technology. वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि devices भी fast से faster होती चली गई, and CPU also become faster and faster. So in order to match the speed of the devices and the speed of the CPU, we were required to invent the faster buses. So more and more faster buses were introduced, and some of these buses are PCI bus, Peripheral Component Interconnect. जब ये बस आई थी तो उस वक्त तक हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूट फास्टर बस नहीं थी अवेलेबल। So I still remember it was 133 megabits per second की capability थी to handle the devices, or to exchange the data between the memory to the device, or from device to the memory. Then there was another bus which was called a SCSI bus. हार्ड डिस्क में हम आईडी बस यूज कर रहे थे, पहले आईडी इंटरफेस यूज कर रहे थे, उसके बाद हमने SCSI इंटरफेस यूज करना शुरू किया, जिसकी की रिबन केबल ज्यादा चौड़ी थी, मीन इसकी बैंडविड्थ ज्यादा थी इस बस की। And this SCSI small computer system interface bus was used to interface the hard disks, faster hard disk, larger size की hard disk, and having the better speed of communication, because the first bus was much faster and better. So there were other also devices like CD-ROMs, like scanners, those were connected using this SCSI bus.
और आजकल एक लेटेस्ट बस है जो कि फ्यू ईयर्स से दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, जो कि आप शायद बड़ी कॉमन भी यूज़ करते होंगे अपनी यूएसबी स्टिक के लिए, और बेसिकली उस बस का नाम भी यूएसबी है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो वो पोर्ट जो है उसको भी यूएसबी कहते हैं, और आप इन शॉर्ट आपकी जो फ्लैश डिस्क होती है आप उसको भी यूएसबी कहते हैं, और जो बस है उसका नाम भी यूएसबी है। सो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इफ वी जस्ट लाइक टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज पेंटियम सिस्टम of the modern technology, so you could see different buses here. There is old traditional bus, this one, which was called ISA bus. फिर क्या हुआ कि हमारे पास एक PCI बस आ गई एंड लॉट ऑफ डिवाइसेस जो थी वो शिफ्ट हो गई। फॉर एग्जांपल ग्राफिक कार्ड जो है, आपको वी नीड अ ग्राफिक, आपकी 2D ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स और रियल टाइम इमेजेस को हैंडल करना था, तो ऑब्वियसली दिस बस वाज नॉट कैपेबल, सो यू नीड टू पुट दिस PCI graphic adapter cards on the PCI bus. But also there are still devices that are connected on this ISA bus. So you need to have the interface between the ISA bridge. ISA bridge is a bridge between two PCI and this ISA bus. Similarly, CPU और memory के दरमियान एक special bus, special channel establish हो गया, और this is basically an interface between the PCI bus and this faster latest buses which are between the PCI and the memory and the cache itself. मैंने आपको बताया था कि cache is a storage that is usually within the CPU. So उसके अंदर भी obviously still you need to have a channel also, and that is a very fast channel, so that the CPU spending very few nanoseconds or microseconds should be able to read the data from that. So these are the different variety of buses which are available. So I think when we will talk about the IO system, we will talk about in detail the functionalities of these buses. Let us talk about the boot sequence. What is a boot sequence? Because it also contains certain fundamental concepts which are associated with the operating system. Process is almost similar from one computer to the other computer, but it has a lot of minute details and different sequence as compared to the personal computer versus mainframe, or mainframe versus real-time systems. So I will pick up an example given in your textbook, and we'll talk about the typical Pentium boot process. Boot का क्या मतलब है कि आप जब एक अपने सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो इट इज सपोज टू फॉलो सर्टेन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड पुट द स्टेज रेडी, so that the user should be able to use it, so that the kid should be able to play the game, the student should be able to carry out the assignment. So वो जो तमाम sequence है, that is between pressing the power on till the graphical user environment is made available, or till the shell command prompt is available to you to instruct the computer to carry out the task that you want to assign to the system. So इस sequence को हम कहते हैं boot sequence. अब इस sequence में आता क्या है? Let us talk about all these sequences, the sequence in detail, the part of each instruction that has been considered the sequence of booting the computer. So on each motherboard or parent board is a program that is called system BIOS. Basically BIOS is a chip that is provided onto the motherboard. इस chip के अंदर there are certain instructions, और modern technology में ये जो BIOS है ये flash ROM में change हो चुकी है. Now usually we have got a flash ROM that is taking up the responsibility which were initially used to taken up by the BIOS chip. वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि उस chip में और इसमें क्या फर्क है. So the BIOS contains low-level IO software, including procedures to read from the keyboard and write it onto the screen and the disk. ये वो बहुत ही elementary basic procedures हैं to handle the boot sequence, to carry out the task. So इसलिए ये basic instructions are provided within the
BIOS. So when the computer is booted, the procedure in the BIOS is started. It first of all checks whether all the components are connected and available. For example, it checks the RAM, checks the keyboard, the graphic card, because graphic card के जरिए उसने आपकी स्क्रीन तक जाना है. So it checks all the basic devices. It then starts scanning ISA and PCI buses. Why? हमने देखा कि तमाम devices are connected to the CPU, connected together over a bus. Either वो ISA bus के साथ connected है या PCI bus के साथ connected है. So it starts scanning ISA and PCI buses and detect all the devices which are attached. It record all these devices. उसका एक लिस्ट बना देता है, आप ये समझ में कि ये डिवाइसेस जो हैं हमारे पास ऑनलाइन कनेक्टेड है. अब इस लिस्ट को हम बाद में यूज करेंगे. The plug and play devices are also encountered or recorded, क्योंकि there are two options. मैंने आपको बताया था कि plug and play device का मतलब ये है कि while you are working on your computer and your computer is booted, जैसे ही आप plug and play device किसी पोर्ट पर लगाते हैं, USB पोर्ट पर लगाते हैं या साउंड कार्ड को साउंड कार्ड की पोर्ट पर लगाते हैं, माइक लगाते हैं आप या स्पीकर लगाते हैं, और अगर उसका पहले से ड्राइवर अवेलेबल नहीं है वो CPU प्रोवाइड कर देते हैं. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि while the system was off, you might have connected some plug and play devices. तो इसीलिए ये plug and play device जो है उसको भी डिटेक्ट करके उसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है. If the devices present are different from when the system was last booted, then the new devices are configured. अब ये कॉन्फ़िगरेशन अभी इस स्टेज पे आप ये समझें कि उसे कॉन्फ़िगर कर लेता है. कैसे करता है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे. कि सपोज लास्ट टाइम जब ये सिस्टम बूट हुआ था और आज जब सिस्टम बूट हो रहा है या नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम बूट हो रहा है, इफ देयर इज अ चेंज इन द स्टेटस, क्या कुछ नई डिवाइसेस उसमें ऐड करके इसको रिबूट किया जा रहा है सिस्टम को, या कुछ डिवाइसेस को रिमूव करके सिस्टम को रिबूट किया जा रहा है. So if there is any change, then the system make the adjustment accordingly, जिसको हम कहते हैं configure it accordingly. Then the BIOS determines the boot device. अब इसके बाद ये डिसाइड करता है कि मैंने बूट कहाँ से करना है. क्या मैंने फ्लॉपी डिस्क से बूट करना है, क्या CD-ROM से बूट करना है, या क्या हार्ड डिस्क से बूट करना है, या आपकी फ्लैश स्टिक जो है वो भी बूटेबल फ्लैश डिस्क आती है. तो अगर बायोस के अंदर एक सीक्वेंस आप दे सकते हैं कि आप कहां से बूट करना चाहते हैं, मींस कि कहां से आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना चाहते हैं इनटू द सिस्टम. सो इट फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन्स द बूट डिवाइस कि किस डिवाइस से वी आर सपोज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम. द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूट डिवाइस इज रेड एंड एग्जीक्यूटेड. किसी भी डिवाइस का जिस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, यूजुअली उसका जो जीरो सेक्टर और जीरो ट्रैक होता है, दैट कंटेन्स अ प्रोसीजर, दैट कंटेन्स अ प्रोग्राम, एंड दैट प्रोग्राम इज इंटेलिजेंट टू लोड द सेकेंडरी बूट लोडर. अब मैं इसके ऊपर आता हूं वो क्या है. The sector contains a program that normally examines the partition table at the end of the boot sector to determine which partition is active. पहले तो उसको लोड करता है इनिशियल बूट लोडर को. इनिशियल बूट लोडर डिटरमिन करता है कि अगर हार्ड डिस्क से आपने बूट करना है तो उस हार्ड डिस्क का कौन सा पार्टीशन एक्टिव है. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव पे पड़ा है, D ड्राइव पे पड़ा है, E ड्राइव पे है. विच पार्टीशन कंटेन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाय डिफॉल्ट जिस पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस पार्टीशन को एक्टिव पार्टीशन बनाएंगे. अगर वो पार्टीशन एक्टिव नहीं होगी तो आप सिस्टम को बूट नहीं कर सकेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं कर सकेंगे. देन अ सेकेंडरी बूट लोडर इज रेड फ्रॉम द एक्टिव पार्टीशन. ये जो सेकेंडरी बूट लोडर है, इनफैक्ट ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और उसको कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. सो दिस लोडर लोड्स
in the operating system from the active partition and start that. Start that का क्या मतलब है कि कंट्रोलर उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर चला जाता है और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, मीन्स के कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. The operating system queries the BIOS to get the configuration information. अब जब बूट टाइम पर स्टार्ट में बायोस ने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन सी डिवाइसेस मेरे साथ अटैच्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस से पूछता है कि भाई कौन कौन सी डिवाइसेस आपने डिटेक्ट की हैं मेरे लिए, और देन वो चेक करता है कि वेदर ऑल द डिवाइसेस जो हैं आर कॉन्फ़िगर्ड, कि ऑल डिवाइसेस जो हैं उसके डिवाइस ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, और अगर किसी डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो फिर इट loads that particular device driver into the kernel. So OS then loads all the device driver into the kernel. Then OS initializes its table. अब OS जो है वो जो टेबल मैंने आपको बताया था कि आप एक टेबल में एंट्री कर सकते हैं किसी डिवाइस को आईओ करने के लिए ना, टेबल में मैंने कहा था उसके मेक एन एंट्री, तो बेसिकली दिस इज द टेबल. OS initializes its table containing the entry for each and every devices that is attached and all the procedure that the operating system is supposed to execute in order to fulfill the commands given by the end user to the operating system or given by the programs to the operating system. So then after doing that it execute a process जो कि आपको एक command prompt देता है, जो कि shell की prompt है, through which you can give the instruction to the operating system और ये graphical user environment को load कर लेता है. So this is basically the boot sequence of a typical Pentium machine. Next is the variety of operating systems. Before we jump into the concepts, so let us talk about the different types of operating system which are available to us. कौन से operating systems हैं भाई? We have already seen in the previous course के variety of computers available हैं. हम अब इसमें we have got an opportunity कि हम साथ साथ कंप्यूटर की वैरायटी भी देखेंगे और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फीचर्स जो हैं, मोस्ट फंडामेंटल और बेसिक फीचर्स हैं, उनकी भी बात करेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी कम्स इज द मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ऑब्वियसली द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द मेन फ्रेम्स. So usually it has got lots and lots of hard disks. बहुत सारी hard disks होती है which are attached onto the mainframe that you otherwise cannot attach to the personal computers or the workstations. So it carry out lots of I/O jobs क्योंकि obviously if you have got lot of disks, so obviously the users will keep on asking the data which is stored onto this hundreds of disks which are connected in the mainframe computers. The typical mode of operation of this mainframe operating system is the batch. For example, if you want to compute the salary of one particular organization, you are not supposed to run it in an interactive mode. You can just submit the task and maybe in the night or maybe in the evening or maybe at any time in the background without having the interaction, because you have provided all the data and that data is available, so it is just need to compute the salary of one particular month. तो हम उसको कहते हैं batch processing. Then come the transactions. Transactions हैं, for example, you have to make the reservations. So airline systems में आप जाते हैं और आपकी रिजर्वेशन होती है. बेसिकली इसमें कंप्यूटिंग बहुत कम है लेकिन आईओ बहुत ज्यादा. आईओ इज मच हायर एज कंपेयर टू द कंप्यूटिंग, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको इनपुट एंड आउटपुट कैरी आउट करना होता है. या फॉर एग्जांपल बैंक में एक क्लाइंट आता है और उसने अपनी अमाउंट जो है वो जमा करानी है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन उसके डेटा को एक्सेस करना, अपडेट करना, आईओ जो है दैट टेक्स टाइम. Time sharing is the mode of operating system in which the interactive users are entertained. आपने डेटाबेस से क्यूरी करनी है, आपने इंटरेक्टिव मोड के अंदर एक क्यूरी दी और उसने आपको जवाब दे दिया. आपने पूछा कि जनाब फलानी फ्लाइट जो है उसका स्केड्यूल क्या है, उसने कब डिपार्ट करना है, आइटिनरी क्या है. आप उसके लिए डेटाबेस को एक क्यूरी देंगे, ऑनलाइन सबमिट करेंगे और विद इन नो टाइम वो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन टू द स्क्रीन. The types of the operating system that carry out such type of mainframe tasks are traditional हमारा IBM 360
operating system, और then there were TSS operating system, FMS operating system. लेकिन बाद में जो UNIX आया था तो UNIX also was used on the mainframe computers. और मैंने आपको बताया कि one of the flavor of the UNIX is also called as a Linux. Server operating systems. These large computers, workstations, and even the mainframes, they are used as a server for the multiple users over network. Mainframe में क्या होता है कि all the users are connected, physically connected. Data center में आते हैं, computer center में आते हैं, जहाँ पे you can might have 100 and more than 100 terminals which are attached with the computer. 256 terminals which are attached to the mainframe computers, but they are physically attached. जबकि server में क्या होता है कि the system is over there and any client anywhere from the world or anywhere from the country or anywhere from the globe can connect to that particular mainframe or to that computer called server with the help of internet. This is the basic difference. So the purpose of the server operating system is that it is supposed to provide certain resources. It share the resources. It share the resources among the users, और users को कहते हैं client. So you can have a file server that provide you a space onto the hard disk, or all the user would like to save their files onto the file server. You might have requirement of the print server that facilitates a lot of user to print their files, or you might request the web services, and for that purpose you need an operating system. And examples of the operating systems are very typical: the Windows Server 2003, Windows Server 2008, and Linux, UNIX, and also free BSD. BSD is Berkeley software distribution, the Unix-like operating system developed at Berkeley software distribution, Berkeley University. Then is the multiprocessor operating system. Multiprocessor operating systems basically are the concepts in which we connect multiple CPUs in a single machine. एक computer में multiple CPUs available हो सकते हैं. We may call it as a parallel computing, or we may call it as a multi-computers or multiprocessors. Usually the modern operating systems, the modern releases of the older operating system like Windows, Unix, Linux, they have the capability to handle such type of hardware or such type of platform, and they provide all the operating system services to them. So they need a special operating system, means special features which are the variant of the server operating system. Server operating system में भी बहुत सारे servers हैं, बहुत सारे computers हैं, but those are isolated, एक दूसरे से ज़्यादा हैं. एक कंप्यूटर के ऊपर एक CPU है, and you have multiple computers and multiple CPUs. Whereas in the multiprocess operating system, एक मशीन में multiple CPUs हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था. मल्टी कोर की हमने बात की थी और मल्टीप्रोसेसर की बात की थी, हाइपर थ्रेडिंग की बात की थी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो मल्टीपल CPUs हैं. सो मल्टीपल CPUs होना एक और कैटेगरी है, और जो सर्वर्स हैं मल्टीपल होना वो एक और कैटेगरी है. Okay, so you need to have the operating system that should be able to handle that. PC operating system, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं. लाइक द CPM जो फर्स्ट PC बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो गेरी किल्डर ने बनाया था, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में बनाया अपना MS-DOS, फिर विंडोज़ आया, और बिल गेट जो है उसने PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया, और उसकी लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं और उसकी लेटेस्ट जो है रिलीजेस भी हैं, विच इज़ मोस्ट मॉडर्न एंड एडवांस्ड एज कम्पेयर टू द इनिशियल वन. और
ये वही है, फॉर एग्जांपल लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, विंडोज़ का एक फ्लेवर है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ एमई है. सो दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम. सिमिलरली मैकिन्टॉश जो है फॉर एप्पल कंप्यूटर के ऊपर, यू हैव गॉट एन एप्पल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ फॉर दी पर्सनल कंप्यूटर्स that is used for. Smartphone operating systems. Smartphones have almost the same capabilities, I must say, or almost the same capabilities as that of the personal computer. The difference is basically in terms of size and weight and the user interface, because they are small in size. So you might have seen the personal digital assistants called PDAs, or even the mobile phones or the latest mobile phones that have all the capabilities of, for example, opening your PDF file, editing your Word file, or handling the Excel sheet of Microsoft Office. So basically almost the same task that the operating system provide for the personal computer. So basically your these handheld devices or the smart devices, which are very small in sizes, also have the similar capabilities. But the difference is that the personal computer does have the hard disk, whereas these type of handheld devices cannot afford to have the hard disk. So usually we have a media card or the storage card, very small card that provide you the storage facility. So we do not have the hard disk available. So these are the platforms like iPhone hai, BlackBerry hai, Nokia के platforms हैं, Android platforms हैं, where we have these devices that have been very popular nowadays, और operating system भी उसी के हिसाब से उसमें available है. Android operating system है, then we have a Palm operating system. बहुत अरसे से Nokia was using an operating system which was called Symbian operating system. So these are basically the latest development. Then embedded operating systems. ये भी operating system है, इसलिए कि the devices, the modern devices, although they are not the computers, but they are working like a computer. They have the concept like the computer. They have the implementation like the computer. For example, your TV sets, your car, you have got a console, computer console in your modern cars where the computer controls the lot of functionality of your car. You have an MP3 player, उसके पास you might have seen कि उसमें screen भी होती है और आप एक उसमें use कर सकते हैं like computer. But the difference between this is that कि these are provided for special purposes. जो काम टीवी का है वो काम जो है वो सिर्फ टीवी ही का काम करेगा. वॉशिंग मशीन जो है वो सिर्फ वॉशिंग मशीन ही का काम करेगी. Your microwave oven is only for the services that a microwave oven can perform. But basically it has got a chip where this operating system has been loaded, or usually that is the lifelong of that particular device. और उसको यूज़र अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता. It is provided by the manufacturer and stored on ROM. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि information permanently stored on a computer, information permanently stored on a chip is called a firmware. तो ROM में जो आप इंफॉर्मेशन रखते हैं उसको firmware भी कहते हैं. तो ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है it is in the form of a firmware ROM में प्रोवाइड किया जाता है. और इसकी एग्जांपल्स है QN and VWorks and different series है जिसके लिए हम X का वर्ड यूज करते हैं. Then real-time operating system. There are certain situations, environment where the computer controls the environment. For example, manufacturing of the car industry. Manufacturing of the car industry जहाँ पे you might have seen the conveyor belt, जिस बेल्ट के ऊपर वो सारी की सारी कार मूव कर रही होती है. Then there are number of robots, the machine, human-like machine
that assemble the car, different components of the car. They perform the paint, for example. The car ka jo paint hai is carried out by the robots, because it is usually carried out in a very, very hot and humid environment. few 100 degree centigrades के environment में कार को bake paint किया जाता है. So it's not possible for the human being to go inside and paint that car. So basically these are the robots who paint the car. So these all are the intelligent machines. So basically these are all just like the computers. So then there are two types of tasks that the operating system are to handle. It's a hard real-time system task, where the system must provide the absolute guarantee that a certain action will not occur at any particular time. एक कन्वेयर बेल्ट से गाड़ी चलती हुई आ रही है और एक खास स्टेज के बाद the rest of the controller is required to pick up. अब उसने उसको छोड़ दिया, दूसरे ने उसको पिक नहीं किया, तो नीचे से या on the back side से जो सेकंड आएगी वो उसको हिट करेगी, and there will be a crash. Similarly, in the factory where the computer is controlling the temperature, अगर फर्नेस जो है एक certain temperature को क्रॉस कर गया है और अगर उस वक्त उसके बाद उसके कंट्रोल से उसको स्विच ऑफ ना किया जाए तो उसका हीटिंग बढ़ती चली जाएगी. That might destroy the product which is being manufactured to that particular factory. So the controller is bound not to miss any particular task, और उसको हम कहते हैं hard time task. So there are also examples in the avionics and in the military that we do not afford to miss any particular task, क्योंकि aircraft जो हैं वो भी कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं. कंप्यूटर जो है जहाज की लैंडिंग करवाता है और उसके टेक ऑफ में. So basically although the pilot is there, but yet the control is with the computer. So you cannot afford to miss कि जनाब एक सिंगल मिस्टेक कर दे कंप्यूटर और जो लाइफ है वो बहुत सारे पैसेंजर्स की might go on stake. Then there are soft real-time tasks in which you can occasionally miss certain targets, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजिक सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं. नाउ इफ यू मिस आउट फ्यू फ्रेम्स, नॉर्मली देयर आर 25 फ्रेम्स पर सेकंड थ्रू विच अ वीडियो इज प्लेड बैक, जिसमें कि आपको नेकेड आई से डिफरेंस नजर नहीं आता कि अगर आप 15 फ्रेम्स पर सेकंड पे प्ले करें या 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे प्ले करें. सो अगर आपके 1, 2, 3, 5 फ्रेम जो है, इफ यू ड्रॉप दोज फ्रेम्स, सो द यूजर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट दैट इवन के ये फ्रेम मिस हो गए. या व्हाइल लिसनिंग टू अ सॉन्ग, if one particular clip is skipped, so your ears might not be able to detect that. So these are also the intelligent devices that are playing, but the operating system can afford to not to meet each and every task, and there are few which might be skipped. So the examples of the real-time system is a typical example of one operating system which is called ECOS. So maybe जब time मिलेगा we'll talk about it later on and the details. Okay. Smart card operating system. The smallest operating system that run on smart cards, which are credit card size device containing the CPU chip. ये जो आपके ATM कार्ड्स हैं, आपने देखा इसकी बैक के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, या अब जो आपके RFID कार्ड आते हैं that contains a chip inside. वो कार्ड के अंदर एक चिप बिल्ट इन है और माइन्यूट सी टाइनी चिप है, लेस देन द साइज ऑफ योर नेल, उसके साइज से भी छोटी या उसके साइज जितनी होती है चिप, और वेरी टाइनी एंड थिन चिप दैट इज एम्बेडेड इनसाइड द कार्ड. दैट chip contains certain information. So you are required to carry out the instructions which are present in that. So since ये इतनी छोटी सी chip है, तो it has got a very severe processing and memory constraints.
So it has got a very limited memory, obviously chip card के अंदर है, and it has got very limited processing capabilities and no power usually, because it is powered when it makes a physical connection with the reader. जब आप अपने कार्ड को किसी रीडर में डालते हैं तो it draws the power from that particular reader in order to execute the instructions which are saved into that particular chip. So the smart cards are usually the Java oriented, that is इसके अंदर जो ROM है, read only memory है, उसके अंदर it has got certain instructions and then it has got an interpreter which is called Java Virtual Machine JVM. A JVM interpreter जो है has brought a revolution because you can run JVM on variety of platforms. आप JVM को which is a instruction interpreter जो कि Java applets से Java की जो instructions है उसको interpret करके execute करता है. So you can install JVM onto any machine and you can run it over there. So you can have a variety of programs. आपको कस्टमाइज किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, बल्कि प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, बल्कि वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म पे यू कैन रन JVM. So this JVM Java Virtual Machine interpret the set of small programs जिसको हम Java applets कहते हैं. ये छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स हैं विच आर कॉल्ड जावा एप्लेट्स, और इन जावा एप्लेट्स की मदद से हम जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं और दीज इंस्ट्रक्शंस आर डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द JVM machine. So the resource management and protection becomes problem if two applets are simultaneously made active. So the JVM needs to be very careful, or the environment needs to be very careful, क्योंकि sometimes we put multiple tasks or multiple Java applets जो है system is capable of handling that. तो ऐसी भी situation आ सकती है where two applets have been loaded. अगर दो applets loaded हैं then we need to isolate both from one and the other. Okay, so these are the different flavors that we talked about of the operating system. Okay, next is the operating system concepts. Dear user, we are studying the basic fundamental concepts, और मैंने आपको बताया we are studying chapter number 1. In this particular chapter, we are supposed to cover the complete operating system, but with some little bit overlapping, little bit details of each and every component. So we need to talk about the processes, we need to talk about address spaces, files, system calls, I/O devices, and we should understand the basic functionality and the basic working of all these concepts. ऐसा क्यों नहीं है कि हम कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाएं, जैसा कि चैप्टर नंबर 2 में हम विल टॉक अबाउट प्रोसेसेस, एक चैप्टर में विल टॉक अबाउट I/O devices. Why we are forced to learn each and every component first? The reason is very obvious. Students, in order to understand the working of a process, you need the basic working or basic fundamentals of the memory system. Basic working of the address space. कि what is an address space? अगर आपको address space का concept समझ में आएगा तब आप process के बाकी concepts को समझ सकेंगे. Similarly, if we are talking about the I/O devices, अब I/O devices को आप handle करते हैं with an abstraction which is called a file. So you basically need a file system in order to understand the I/O devices. Similarly, the process needs to handle the I/O devices, process needs to handle the file system. So that is the basic reason where we should have the little bit knowledge of almost all these fundamentals. So that's why in the first chapter we have put all the concepts together and we are trying to cover all these concepts. So मैंने जैसा कि आपको शुरू में कहा था कि if you do not understand certain concepts at this stage, so please don't worry, क्योंकि once we will go into the relevant chapters and we will discuss it in detail, that particular section or that particular topics, then you will have a better understanding of that topic. So please don't worry,
and don't be confused कि ये एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है. No, it's a very interesting subject. और ये वो सब्जेक्ट है जो आपको distinguish करेगा from ordinary user to a computer professional. Okay, so we will talk about these processes, but I think for today it is sufficient, and I will start from the operating system concepts and take all these concepts one by one from the next lecture. Till then, Khuda Hafiz, Allah Nigeban.